Welcome to this session on studying a newspaper article. Let me see whether I'm live. And by the way, hope all of you are doing well. Hope all of you are in the best of health and spirits. All right, I am live. Okay, so this is some information about me on the screen. My name is Shriti Sharma. Please install the Unacademy Learning app and unlock the free special classes using my code and start learning. This is the code. Apart from that, Sharmaji is the code. Apart from that, also join this Telegram channel where I would keep updating you on the schedule of the classes. And also, if you have any doubts, you can definitely share them here on the Telegram link. Uh, these are some of our paid subscription plans. If you want to go for streamlined coaching, then you can go for plus classes or iconic as per your convenience, as per your needs. With plus classes, you get live classes, weekly tests, unlimited access, structured courses, study material. With Iconic, you get all the benefits of Plus. Along with that, you also get study planner, study material, experts guidance, test analysis, and personal guidance. तो आज हम करेंगे अभी थोड़ा छोटा सा editorial. We are going to discuss some article which is more spiritual in nature. Just looking if there are any chats. कुछ word आपको समझना है, कुछ phrase ना समझ आए तो बताओ. Quickly हम पढ़ लेंगे, ठीक है? आज का न्यूज़पेपर रीडिंग यही है. तो टॉपिक ये है और इस बार मैंने एडिटोरियल द पर्सन हु हैज रिटन इट आई हैव रिटन हर नेम एज वेल बिकॉज सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन वेदर हुज व्यूज आर दीज ठीक है तो टॉपिक इज इट्स गुड टू बी एन एथिस्ट एंड दिस एडिटोरियल इज बाय अंजलि भवन ओके एथिस्ट का मतलब क्या होता है डज एनीबडी नो कैन यू कंट्रीब्यूट हियर तो एथिस्ट इज वन हु बता रहे हैं क्या आप लोग आई एम लुकिंग एट द चैट्स अच्छा बाय द वे दिस रूट थियोलॉजी ये THEI, THEO, this root relates to what? It means God or religion. So atheist is क्या है? Atheist. A, no, right? So one who doesn't believe in God. One who doesn't believe in God. अच्छा, अब ये बताइए कि इसका opposite क्या होता है? The opposite of atheist is theist. Theist. Theist is somebody who does believe in God. Or simply you can also say believer. बिलीवर भी ऑफ कोर्स बिलीवर कुड बी बिलीविंग इन एनीथिंग बट गॉड के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है तो थीस्ट इज वन हु बिलीव्स इन गॉड एथिस्ट इज वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड व्हाट अदर वर्ड्स डू वी हैव विद थियो देन देयर इज अनदर वर्ड थियोक्रेसी किसी को पता हो तो मीनिंग बताओ थियोक्रेसी क्या होगा थिंक अबाउट इट वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी सो डेमोक्रेसी में DEMO as a root stands for people. So democracy is government for the people by the people. Hello Aman. तो थियोक्रेसी क्या होगा अमन बताइए व्हाट इज थियोक्रेसी थियोक्रेसी इज गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ और गवर्नेंस इन द नेम ऑफ गॉड और रिलीजन अब मैंने ये नहीं लिखा कि डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल बट theocracy is not government by God because literally it's not that God is ruling the country but it's in the name of God कि हाँ ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं इस कंट्री में बिकॉज होली बुक में ऐसा लिखा है तो वैसा गवर्नेंस होता है थियोक्रेसी व्हाट इज थियोलॉजी थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड लिख लीजिएगा थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड study of religion or God. So anybody who wants to become a priest or a pastor, they have to study theology, right? ओके तो वापस आते हैं आर्टिकल पे आपका कुछ कमेंट है नहीं है तो आगे बढ़ते हैं ऑथर ने कहा है इट्स एक्चुअली गुड टू बी एन एथिस्ट इट्स एक्चुअली गुड टू बी एन एथिस्ट एंड नॉट अ बिलीवर एंड नॉट समबडी हु बिलीव्स इन गॉड एथिज्म is the noun form of atheist atheism is
a noun, it's an abstract noun. Atheism has shown me things I would never have thought of as a devout person. देखो, devote और devoted तो सबको पता है, ये word लिख लो, devout. Devout कौन होता है? One who is devoted to God. भक्त, ठीक है? One who is devoted, devout. तो ये devote नहीं है, देखो क्या लिखा है? VOUT. Devout is one who is devoted. Is devout. तो ऑथर ने कहा है एथिज्म से ऑथर हैज सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच शी वुड नॉट हैव थॉट ऑफ एज अ बिलीवर, एज अ भक्त. I often wonder why people pray to God. I do not mean people like saints or seers, but just normal people like you and me. So, all right, author has asked a question, why do people pray to God? And then she is making exceptions also. I don't wonder about saints or seers. So, seers कौन होते हैं? SEERS. These are the real wise people. हिंदी में कहते हैं ऋषि. तो आप वो लिख सकते हो seers. सेज होते हैं साधु. सेज, साधु. Seers, seer, ऋषि. ठीक है? So I don't mean people like saints or seers, but just normal people like you and me. Is it for material gain? क्या इसलिए लोग प्रे करते हैं? मटेरियल गेन के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, बंगला के लिए? इज इट फॉर समवन एल्स? किसी और के लिए प्रे करते हैं? और फॉर योर ओन सेल्फ, या फिर खुद के लिए प्रे करते हैं? और इज इट जस्ट टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशंस? वेंट आउट का मतलब क्या होता है? वेंट आउट इज टू एक्सप्रेस, राइट? टू रिलीज. लिख लीजिएगा. यू नो वॉट वेंट इज, है ना? तो you when you vent out your feelings, you release your feelings, you express your feelings, you vent out your frustrations, you release your frustrations. That's what the author is asking. मतलब लिटरली नहीं पूछ रही है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग एज रीडर्स आंसर तो देने वाले हैं नहीं. बट शी इज लाइक, आई वंडर व्हाई पीपल प्रे. Do they pray for some material gain? Do they pray to please for somebody else, for their own self, or do they pray to just release their frustrations? Then the author herself is answering, actually none of them, to be exact. फिर वो लिस्ट बताती है कि लोग एक्चुअली प्रे क्यों करते हैं. आई होप यू गाइज आर लर्निंग वर्ड्स एज वेल. लिखते जा रहे हो, एजेंडा यही है. आर्टिकल से हमको कुछ खास सीखने को तो नहीं मिलता है. आई मीन इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्यूज, ऑन योर व्यूज एक्चुअली. सीखना क्या है? वोकैब सीखना है, सेंटेंसेस के मीनिंग सीखना है. तो नाउ शी इज गिविंग द रीजंस व्हाई पीपल प्रे. पहला, तो गॉड वोंट क्रश देम लाइक बग्स ऑन प्लाईवुड. यानी कि इससे क्या मीनिंग आ रहा है? लोग इसलिए प्रे करते हैं ताकि गॉड उनको क्रश ना करें, like bugs, like कीड़े on plywood, you know, on like maybe a plywood table. So क्या ये literally the author means that? No, it's metaphorical. She is saying that the first reason why people pray is because they are scared of God. So that God does not vent his or her anger on the people. I hope you got it. तो ये literally जो लिखा है वो meaning तो आप समझ रहे हो, आपको metaphorical या figurative, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑथर पूछेगा आरसी में कि व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? इज इट दिस so that they are not treated like insects? People, no, it's not the reason. The reason is because they fear God, not because God would treat them like insects. No, that's literal. It's because they feel like कि God उन पे गुस्सा ना निकाले. That's the author's reason, the first one. Second reason author ने दिया, to escape and for psychological relief from problems in their daily lives. तो ये तो एक बहुत ही actually एक बहुत major reason है why many people pray, कि daily life के problems को escape करने के लिए, psychological relief के लिए. And I think it's such a valid reason. I mean, it really gives us, praying gives us psychological strength, mental strength. This all might sound surprising, but this is the truth. And my change from believer to an atheist showed me this with stunning clarity. Like, very clearly, I saw that people pray to get relief and to escape from the burgeoning problems in their daily life. लिखो, burgeoning का मतलब लिखो growing. Please write down the meaning of burgeoning. Spelling देख लीजिए, screen पे है. BURGEONING. Burgeoning is growing, multiplying. जल्दी से लिखिए. ग्रोइंग. ग्रोइंग मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा ग्रो कर रहा है एज में, नॉट दैट. ग्रोइंग इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग इन नंबर्स. दैट इज बर्जनिंग. ठीक है? कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेनी अ टाइम्स आई ऑलवेज से सिनोनिम पढ़ लिया पर पता ही नहीं है यूज कैसे करना है. दैट्स अ प्रॉब्लम. तो पहले क्या नहीं, मैं हमेशा मीनिंग के साथ ये भी बताती हूँ क्या नहीं है ये. तो जब हम कहते हैं ग्रोइंग, नाउ सी, आई कैन ऑल्सो से लाइक फॉर अ kid I can say, अरे he is a growing child, he needs to eat more.
बट क्या burgeoning का मतलब ये होता है इज अ burgeoning child? नो, नॉट एट ऑल. Burgeoning is growing in the sense of multiplying. जैसे कि the population of the city is burgeoning. The burgeoning population of the city. यानी कि जो numbers में grow कर रहा है, population बढ़ रहा है, multiply कर रहा है. That is what burgeoning is. ठीक है? तो people इसलिए भी pray करते हैं to escape from the burgeoning problems of their daily humdrum lives. Humdrum लिखिए. Write down humdrum. हमेशा मैं कहती हूँ ये नहीं होना चाहिए कि मैथ्स नोटबुक के लास्ट पेज पे आप इंग्लिश का नोट्स लिख रहे हो. ठीक है, मेक अ प्रॉपर डेडिकेटेड नोटबुक फॉर इंग्लिश. हमड्रम का मतलब होता है डल, ऑर्डिनरी, बोरिंग. जनरली हम कहते हैं हमड्रम रूटीन ऑफ लाइफ, वही डेली सेम चीज चल रहा है. वेयर इज माई पेन? तो हमड्रम इज डल, बोरिंग, ऑर्डिनरी, रिपीटेटिव. लाइफ में सेम चीजें चलती जा रही हैं, रोज सेम रूटीन चल रहा है, तो आप यूज करोगे आई वॉन्ट टू एस्केप द हमड्रम ऑफ दिस ऑफ लाइफ एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन. ओके, ठीक है, आगे देखिए. They desperately want to believe that their problems will be cured by an invisible entity, almost like magic. So this is what many people want to believe, is what the author is saying, not what your teacher is saying here. Okay, your teacher is a big time believer. Okay. They look to seek release from the pain and frustration they face through communion with God. Communion का मतलब लिखिए association. Becoming one. Association. Communion लिखिए association. कुछ डाउट नहीं है अभी तक? All right. मतलब I'm asking. I don't see any doubts here. और hope you guys are able to hear me this time. All right. So they want release from pain, frustration they face through communion, association with God. To put it very simply, people are cowardly by nature. Now, I think everybody knows the meaning of cowardly. Kayer, right? Cowardly क्या होता है? Kayer. People are kayer by nature is what the author is saying. They can't face problems on their own and they want to depend on an omnipresent entity to solve problems and give them the happy ending of a fairy tale. Like Snow White and Prince Charming. तो लंबा सेंटेंस है थोड़ा सा. दे कांट फेस, दे मतलब पीपल, ऑथर हम लोग को ताना मार रही है कि वी कांट फेस प्रॉब्लम्स ऑन आवर ओन. खुद पे हम इंसान प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाहता है, कर पाता है. एंड पीपल वांट टू डिपेंड ऑन एन ओमनी प्रेजेंट एंटिटी, समबडी हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड टू गिव देम अ हैप्पी एंडिंग. हैप्पी एंडिंग लाइक अ फेरी टेल. और फेरी टेल का भी एग्जाम्पल लिखा है लाइक स्नो वाइट एंड प्रिंस चार्मिंग. फेरी टेल एक आपने सुना होगा ना, स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्फ्स. स्नो वाइट थी, पूरी कहानी मैं नहीं सुना रही हूँ, मुझे खुद ही याद नहीं है. उसकी शायद ईवल मदर थी, स्टेप मदर ही होगी एज पर द स्टोरी, टिपिकल स्टोरीज. शायद ईवल स्टेप मदर ने उसको कोई किल ट्राई टू किल हर बाय गिविंग हर सम एप्पल थ्रू somebody else or something like that. So she faint. I mean, she went on a coma kind of a thing. She became unconscious, Snow White. So there was seven dwarfs who kept her and I think took care of her or something. Or last में आया होगा कोई Prince Charming. So that's the story in a nutshell. You guys might know better. I तो don't even remember it from my school days. मेरे स्कूल में था भी नहीं ऐसा कहानी कोई. Okay, तो we want to depend on omnipresent. Omnipresent मतलब present everywhere. ये तो आप जानते हो. इसका synonym लिखो. Synonym of omnipresent is ubiquitous. Ubiquitous. Q-U-I-T-O-V लग रहा है मेरा Q. Wait. Let me write it in a better handwriting. All right. Everywhere. और synonym क्या है? Ubiquitous. मतलब present everywhere. God के लिए कहते हैं ना, God is omnipresent. I can say the mobile phone is ubiquitous. आजकल हर जगह दिखता है, सबके पास दिखता है. ठीक है, आगे बढ़े. To complete the metaphor, they liken problems. Liken as in they compare or compare two things which are similar to each other. They liken problems to the evil stepmother. यानी जनता, यानी हम लोग, यानी इंसान सोचता है कि problems evil stepmother की तरह है, जो कि queen है, Snow White की कहानी में ऐसा था. And the pain caused by the problems is the poisoned apple. That's what the author is drawing a comparison. कुछ doubt हो तो please बताना, हाँ. Then the author is saying, I mean, come on, when you can't respect. देखो ये बहुत बोलचाल की भाषा में ऑथर ने लिखा है. कोई पूछे ऑथर का लैंग्वेज क्या है तो आई वुड से
कि ठीक है मेटाफोरिकल तो यूज किया है थोड़ा वहां पे, मतलब कंपेयर किया स्नो वाइट की कहानी से, बट ये देखो ये लैंग्वेज बोलचाल की भाषा टाइप है, कोलोक्वियल लैंग्वेज कहते हैं बोलचाल। आई मीन कम ऑन, when you can't respect the person who is washing your dishes, that means, and cleaning your floors, how can you actually expect a higher power to respect you? I think that's clear. Author is saying if you can't respect people who work for you, how can you expect that somebody, a higher power, would respect you? Again, there is another kick in atheism. Atheism develops your belief in yourself. That's what the author is saying. Ki if you're an atheist, you gain confidence. And that's another kick that you get in a positive way, which is good for people with low self esteem. You can feel the power you have. The realization that you don't have to depend on someone to fix your problems is a powerful one. You are the one who is in control. Also, atheism lends unbelievable clarity to the mind. It has actually made me better in math than ever before. अच्छा ऐसा है? तब तो स्टूडेंट्स ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है because you're preparing for APT. Okay, author is saying that it makes you logical. You can think clearly, abstractly, okay, and reason logically. Okay, without blaming it on all divine related to God, divine happenings. Okay, so that was the article. I think we learned quite a lot of new words, जैसे कि theology, theocracy, atheism तो आप जानते ही होंगे, atheist, theist, right? All these, communion, ubiquitous, omnipresent तो आपको पता ही होगा. अच्छा, can you tell me what's the meaning of omniscient? OMNISCIENT, omniscient. Then can you tell me what's the meaning of omnipotent? Yeah, can anybody tell me the meanings of these words? देखो, ये जो वर्ड है ना SCI, ये जो रूट है SCI, जैसे साइंस एंड ऑल ऑफ दैट, इसका मतलब होता है टू नो. तो omniscient is somebody who knows everything. One who knows everything. जैसे कि पहले तो ऑफ कोर्स मैं गॉड का एग्जांपल देती थी क्लास में, अब तो मैं गूगल का एग्जांपल देती हूँ. गूगल सीम्स टू बी omniscient, one who knows everything. ठीक है. omnipresent is present everywhere. ठीक है. और omnipotent क्या होता है? Omnipotent is somebody who has all the power, who is effective in every way, all powerful. All powerful is omnipotent. ठीक है. तो ये था आर्टिकल ऑन इट्स गुड टू बी एन एथिस्ट. ये आर्टिकल ऑफ कोर्स आई पुट इट हियर बिकॉज वी गेट टू लर्न अ लॉट, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, मैं आपको बता पा रही हूँ ऑथर का टोन, एंड आई एम न्यूट्रली एबल टू असेस इट. मतलब ये इस बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन वी रीड अ लॉट एंड वी थिंक अबाउट एवरीथिंग, राइट, व्हेन यू रीड अ लॉट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी ऐसा सोच, खुद पर्सनली आई एम सेइंग, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एथिस्ट बन के आई विल गेट क्लैरिटी ऑफ माइंड. मतलब ये थॉट, when you have read a lot, most of the thoughts that you read, especially philosophy, is kind of familiar to you कि हाँ इस तरह से मैंने कभी ना कभी सोचा है. बट इस आर्टिकल में ये जो इस ऑथर ने लिखा है, दैट बीइंग एन एथिस्ट वुड मेक अस more logical, will give us better clarity of mind, we would be able to reason better, and it will make us more confident. This is like a completely new thought. This I have read for the first time, and after this class I will think about it. ठीक है, एक बार मैं सोचूंगी कि सच में ऐसा है क्या. मतलब it's a very good thought. I'm going to think about it positively. Now, I'll tell you what why did I put this article? I am, uh, like, I'm very spiritual, very spiritual. Not very religious. I don't follow a lot of religious practices, but very spiritual. So, a believer. And this article is something which is contrary to my beliefs. But that's the idea. I should be able to read it without any bias. एकदम neutrally पढ़ना ज़रूरी है. And this is a step towards being unbiased when I am saying कि हाँ बाद में मैं इस point के बारे में थोड़ा सा बैठ के
सोचूंगी, I will contemplate. And that is what you guys also have to do. Don't keep biases. Reading comprehension mein bias is something which is, it takes a student down. Bias many a times leads to the wrong answer और पता भी नहीं चलता है कि क्या गलती हुई. ठीक है? तो don't keep any biases. All right. तो अब next है about what's happening right now. Becoming a true atheist is difficult depending, yes, indeed. Yeah, because of our upbringing, because of everything around us. कोई भी होगा नहीं complete atheist, I think. ये सोचने की बात है, सोच सकते हैं इस बारे में. We can think about it actually. सोचा जाएगा. We'll do more thinking about it after the class. तो ये जल्दी से ये गणेश फेस्टिवल वाला आर्टिकल पढ़ते हैं. Let's see if there are any words for us to learn here or not. Any new words, any words which would be helpful. So, we are all geared up to celebrate the Ganesh festival, right? Geared up मतलब क्या? एकदम पूरी तरह से ready. Are you all geared up for the test? अभी तो नहीं, right? पूरी तरह से ready. Devotees are enthusiastically flocking to bring home idols. तो देखो, flock, if you remember, flock is a collective noun. As a noun, it's collective, na? Flock of birds, flock of sheep. But we can also use it as a verb. तो जब भी हम कहते हैं कि people are flocking somewhere, यहाँ पे कहा है devotees, again devotees होते हैं भक्त, are flocking to bring the idols home. तो वही क्या, flocking मतलब कि भीड़ में अगर आप कुछ काम करें, बहुत सारे लोग अगर कुछ काम करें तो we are flocking, right? So they are flocking to bring home idols of Ganesh, Lord Ganesh on Ganesh Chaturthi. While we celebrate this grand 10 days festival, all right, can we set aside some time to understand the purpose behind the celebration? Okay, so the author is going to delve deeper into the reason behind the celebration, the purpose. Why do we celebrate? The story of how Lord Ganesh was born is known to all right? Acha. He is the son of Lord Shiva and Goddess Parvati. Lord Ganesh is a bridge between devotees and God. All right, okay. So he acts as a bridge between Bhakt and God. We need to first understand Lord Ganesh to be able to cross this bridge. Okay. There are 8 famous shrines of Lord Ganesh. Now, what is shrine? तो ऐसे देखा जाए तो shrine is a holy place. But literally shrine किसको कहते हैं? What exactly is a shrine? What kind of a holy place is a shrine? Yes, Aman, actually we can. Yes. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि shrine, I think, is a word that many of you must have heard of. और shrine can be used for a temple, for a mosque, किसी के लिए भी use हो सकता है. But literally, what does it mean? What kind of a place is a shrine? Looking at your chats. Okay, Lakshmi Lal Jain, you said temple. हाँ, temple के लिए shrine use होता है. What else? What else do you guys say? Where God resides. All right. So, yes, shrine is where God resides. अच्छा, एकदम literally जाए तो shrine होता है basically, it could be a building or any concrete place, enclosing the relics मतलब जो भी बचा हुआ, something that is left over from somebody who is no more. So enclosing the relics of a saint मैं यहाँ लिख रही हूँ, or any other holy person. Literally ये होता है shrine कि ये ऐसा टेम्पल होता है या ये ऐसा मॉस्क होता है which is it could be a building, it could be any place which includes, जिसके अंदर कुछ relics होते हैं, किसी saint के relics होते हैं या किसी भी holy person के relics होते हैं. That's what literally a shrine is. Relics आप समझ रहे हो, जैसे कोई saint of course saints
अ सेंट हु इज डेड, तो उनके बॉडी का कुछ पार्ट अगर वहां पे हुआ तो इट्स लिटरली अ श्राइन। ये ज्यादा आपको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मिलेगा। हिंदुइज्म में भी श्राइन्स होते हैं। हम जो कहते हैं ना कि अ, किसी गॉड, बहुत बहुत डिटेल्ड स्टोरीज है, बट किसी गॉड का कोई पार्ट, मे बी कोई पार्ट या कोई ऑर्नामेंट एक प्लेस पे गिरा और उस प्लेस पे फिर टेम्पल बनाया गया अराउंड दैट ऑर्नामेंट और दैट पार्ट, तो इवन दैट इज अ श्राइन। ब्रॉडली हम कह सकते हैं टेम्पल एंड ऑल ऑफ दैट, बट लिटरल मीनिंग आई वाज डिस्कसिंग विद यू। आप लोगों ने क्या लिखा है? वेयर गॉड रिसाइड्स, ऑल राइट। Okay, so there are 8 shrines of Lord Ganesh scattered. Scattered is spread over across Maharashtra, popularly known as Ashtavinayak, Asht for 8. There is a custom is a tradition of doing a pilgrimage of these 8 shrines. आप सब जानते हो pilgrimage क्या होता है, right? Visiting a holy place. Usually doing a journey to visit a holy place is a pilgrimage. Doing a journey to visit a holy place. If one understands what Lord Ganesh symbolizes, then one can experience the same fulfillment of this pilgrimage even without undertaking the journey. Okay. Without this understanding, even if one does visit these places any number of times, one would still lead a life of illusion. तो author बोल रहा है कि ये 8 pilgrimage, 8 shrines हैं and people go there. आप 8 जगह पे चले जाएं तो भी you might not really, you know, uh, attain God or get into a communion with God if you don't really understand what these things stand for. But if you know what Lord Ganesh symbolizes, if you understand the real truth, तो भले ही आप वो pilgrimages ना करें, but still you would be in communion with God. अच्छा, illusion is something which is false, right? Something which is not true. अब author पूछ रहा है, what is this illusion? It is the grandest illusion that we all live in. Okay, क्या है ये illusion? That we are this body. Now, अब ये सब ideas I would say कि हमने काफी बार पढ़ा भी है. This is an illusion. ये मोह है, ये माया है. मोह नहीं, माया. Right? It's not true. क्या है? We are this body, this personality, this individual. So ये just this belief that I am I is an illusion. Okay, this body is me. This body is I actually is an illusion. We believe whatever is inside the skin as I and everything outside as other. That's the illusion. This false belief leads to Ashtmaya. Okay, Maya. Maya is illusion, Ashta is 8, the eightfold illusion of I, me, mine, you, yours, they, them, their. ये तो pronouns के forms लग रहे हैं. The truth is that we are not the body, and hence whatever is associated with the body cannot be us. There is only one underlying reality of who we truly are. The multiplicity that we feel is an illusion. Multiplicity is actually variety. Okay? The plurality is multiplicity, the variety. Author is saying, तो ये वैरायटी जो हमें लगता है, मैं, तुम, she, he, all that is an illusion. Mythological stories depict demons as crafters of illusion. Okay, demons आप जानते हो क्या होता है, राक्षस. But this pluralistic world that we having a lot of variety that we experience around us is the ultimate. It's the final illusion. Ultimate तो मैं समझती हूँ final होता है. By the way, what is the meaning of ulterior? Is it the same as ultimate or is it different? What is ulterior? Is it the same as ultimate? Ultimate is final. Perfect. Ulterior, yes, Tanmay, it is hidden. Something which is not on the surface. Something which is not on the. There are many popular stories of Lord Ganesh that narrate how he killed the various demons, the various Danav, Rakshas. With these stories, Lord Ganesh came to be popularly known by various names, by how he killed the various demons. In one of these stories, he vanquishes. देखो एक अच्छा word आया ना, vanquishes. Vanquish का मतलब क्या होता है? To defeat, हराना. थोड़ा हायर डिग्री ऑफ वर्ड है. छोटे मोटे मतलब किसी को आपने लूडो में हरा दिया तो आई हैव वैंक्विश्ड यू वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड देयर. क्या कहता है? वी हैव वैंक्विश्ड द एनिमी. ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्गर वर्ड फॉर वी हैव डिफीटेड द एनिमी, वी हैव कॉन्कर्ड, वी हैव वैंक्विश्ड द एनिमी.
So he vanquished the demon called Vignasur. Hence he is called Vignaharta, the one who eradicates hurdles from our lives. Eradicates matlab completely remove, wipe out. Completely wipe out. पूरी तरह से remove करना. To remove completely, to completely wipe out is to eradicate. Hurdles क्या होते हैं? रास्ते की रुकावटें. Can anybody tell me the synonyms for hurdles? Yes, then मैं ulterior से ulterior motive आता है, which is the hidden agenda. Perfect. Okay, so what are hurdles? They are obstacles. Synonyms लिख लीजिए. Change the color of this pen to write the synonyms. So hurdles are obstacles, obstructions. कुछ आ रहा है आपकी तरफ से synonym? Impediments. सब लोग लिखना, अच्छे से लिखना, अच्छे नोटबुक में लिखना. Impediments, hindrances. All these are. Oh, very good, Lakshmilal. Barriers, restrictions. Perfect. लिख लेते हैं. Barriers, restrictions. Very good. Perfect. Wonderful. Okay, so the one who removes, completely wipes out hurdles from our lives. Okay. In yet another story, it is said that Lord Shiva was battling the demons. During this battle, when he was unable to kill a particular demon, Lord Ganesh was called upon to help him. ये phrase याद रखो, हाँ. ये phrase याद रखो. Calling upon the gods. इन्वोकिंग इन्वोक एक वर्ड होता है. इन्वोक का मतलब होता है और ऐसे यूज होता है. ये बहुत अच्छा मुझे कॉन्टेक्स्ट मिला आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए कि हम जब पढ़ाते हैं इन्वोक, एक्चुअली हम दो वर्ड्स पढ़ाते हैं जो इट सीम्स लाइक आई एम सेइंग हम दो ही वर्ड्स पढ़ाते हैं. देयर आर टू वर्ड्स व्हिच आर लाइक कंफ्यूजेबल्स, सिमिलर टू ईच अदर, इवोक एंड इन्वोक. तो इन्वोक का मतलब होता है टू कॉल अपॉन, बट व्हाट काइंड ऑफ कॉल अपॉन? ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो तो यू आर इन्वोकिंग योर फ्रेंड. नो, it's to call upon the gods. Like here, it said कि here तो I mean Lord Shiva was not able to fight a particular demon, kill a particular demon. तो Lord Ganesh was invoked. हमारे सेंस में कैसे यूज होगा? Like when you pray to a god or when you call a god कि मुझे मदद चाहिए, एग्जाम में पास करवा दीजिए. या फिर इन हिंदुइज्म लक्ष्मी जी की पूजा होती है फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. So goddess Lakshmi is invoked during Diwali for prosperity. इस तरह से यूज होता है. तो goddess Lakshmi is called upon. ठीक है. तो invoke लिख लो, एकदम ही अलग वर्ड है ना. provoke एकदम अलग है लक्ष्मीलाल. provoke क्या होता है? भड़काना. Right, completely different. Okay, आगे देखते हैं. This demon symbolizes our judgmental mind. Oh, that's a beautiful idea. This is also a demon actually. The judgmental mind is nothing less than a demon that keeps comparing, judging, labeling, causing sorrow, confusion, unrest. होता है ना comparison शर्मा जी के बेटे से. उसी से याद है, शर्मा जी कोड जरूर याद रखिएगा. So, but these are bad things. Comparing, judging, labeling, causing, all these things cause sorrow, confusion, unrest. This comparing and judging mind is made of three aspects. What are they? Our unending desires. There are so many desires that we hold on to. No sooner one desire is fulfilled than we are all set to fulfill another one. देखो आया grammar, no sooner than. हमने डिस्कस किया था ना, no sooner के साथ क्या यूज होता है? As a conjunction than. No sooner than का मतलब क्या होता है? जैसे ही पहला वाला एक्शन हुआ वैसे ही दूसरा. As soon as. No sooner than is like as soon as. So here the author means as soon as one desire is fulfilled, we are set, we are set to fulfill another one. हम दूसरे desire के पीछे चल पड़ते हैं. No sooner than. It is a never ending story where fulfillment is not possible. तो आइडिया ये है कि आप खुद भी जब आर्टिकल्स पढ़ो, लुक एट द वर्ड्स, लुक एट द कंजंक्शंस. ये देखो, नो सूनर दैन, नो सूनर के साथ दैन आता है. तो ये एक रीजन है फॉर द जजिंग is of three aspects. No, one, two, beliefs. Our mind is filled with all kinds of beliefs. For example, eating a particular food, performing a particular ritual on a given day would please or displease a deity. Deity would be a god.
One should not wear particular kind of clothes, one should not cut their hair or nails on Saturdays and so on. But beyond these superficial matlab kya? On the surface, यानी कि क्या? Lacking depth. तो author कह रहा है beyond these superficial beliefs is the ultimate, the final myth. Myth is something which is not true. And what is that? That we are this body. क्योंकि आप ये मानते हो अगर कि we are this body, मैं ये हूँ, then only you fall into the superstitions कि अच्छा सैटरडे को बाल नहीं काटना है या नेल्स कट नहीं करने हैं, because you are associating yourself with your body. Tendencies is the third point. Our mind is driven by tendencies like anger, boredom, comparison, depression, ego, fear, greed, guilt, hatred, ill will, jealousy, etc. And I'm pretty sure all of you know the meanings of all these words. तो कोई भी word discuss करने की जरूरत नहीं है. The more we get entangled is उलझना, in the vicious cycle of beliefs, desires, and tendencies, the more we move away from our peaceful state of being. What is a vicious cycle? देखो, माय डियर स्टूडेंट्स, विशस एज अ वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं. विशस का एक मीनिंग क्रूअल भी होता है, इविल भी होता है, ठीक है. बट विशस साइकिल क्या होता है? विशस साइकिल इज अ इट्स अ नेगेटिव साइकिल एंड इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल. अ नेवर एंडिंग नेगेटिव साइकिल इज अ विशस साइकिल. आप लाइफ का ही देख लो. अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि 10th में बोला गया कि वर्क हार्ड राइट नाउ एंड देन योर लाइफ इज सेट, देन नो वरीज. उसके बाद 12th में यही बोला गया, तो यू वर लाइक अरे 10th हो गया, अच्छा किया, नो वरीज. बट देन फिर 12th आया एंड देन अगेन द सेम थिंग हैपेंस. यू आर टोल्ड हार्ड वर्क करो, फिर लाइफ सेट है, फिर नो वरीज, रिलैक्स करना, बट वो आपने कर लिया. फिर आया कि इंजीनियरिंग, देन लाइफ सेट. तो ऑल दैट, बट वी आर नेवर सेटिस्फाइड कि अब इसके पीछे भागो, अब उसके पीछे भागो. एक प्रमोशन हो गया, अब दूसरे प्रमोशन के पीछे भागो. ऑल दैट इज अ विशियस साइकिल, राइट? ऑल राइट. We get trapped in the web of stress and sorrow. Lord Ganesh killing the demons symbolizes the eradication of these defilements of the mind. These are defilements of the mind. So defile is to make dirty. तो ये चीजें हमारे दिमाग को गंदा कर रही हैं. To make unclean. Write it down. Defile is to make dirty, to make unclean. It's a verb. But defilement becomes an abstract noun. So Lord Ganesh killing the demons symbolizes to act as a symbol of. So this entire killing of demons acts as a symbol of the eradication of these defilements of the mind. ये जो mind को defile कर रही हैं. Reinstating a life filled with joy, love, and peace. Lord Shiva is the symbol of pure consciousness, awareness. Consciousness is awareness, which gets shrouded. Shrouded matlab covered. Shrouded means covered. Which gets covered by the judgmental mind. तो हमारा जो प्योर अवेयरनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो किससे कवर हो जाता है? जजमेंटल माइंड से. I said gentle mind, I guess. Judgmental mind. Just like clouds cover the sun, causing darkness. When beliefs, desires, tendencies are removed from the mind, pure consciousness shines forth in the awareness of who we truly are. During this Ganesh Utsav, let's resolve to let go of the tendencies of the mind and pray for the well being of everyone. Let us set aside the desires of the mind and fulfill the will of God. Let us cast away. ये phrase लिख लो, cast away. Cast away मतलब क्या? Throw away, remove. Let us cast away our age old beliefs and live in the pure essence of our true nature. Let us awaken Lord Ganesh within us. यही था हमारा आर्टिकल. काफी शब्द आपको सीखने को मिला और various new words, right? And of course the ideas are also brilliant and the learning is very good actually. सोचना इन चीज़ों के बारे में, मैं भी सोचूंगी after the class. Okay, I was talking about the subscription plans. For the plus subscription, if you're going for the plus subscription, 6 months, the price point is 16,400.
18 months is 28,550 and 24 months is 32,800. You use my code Sharma ji and get a 10% off. और आइकॉनिक जिसमें आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं प्रॉपर कोचिंग की तरह. You get one-on-one live doubt solving, you get live discussion of concepts, you get mentorship, you can book slots as per your convenience. 6 months का है 25,800. Use my code and get 10% off. 12 months का है 39,500. 24 months is 59,999. Go for whichever plan. You'll get 10% off if you use my code, which is Sharma ji, right? And इन सब के थ्रू आपको notes on the go भी मिलता है through Plus and through Iconic. Notes are actually very important. You get a lot of material as well. Wherever you are, you can access the notes from there. Okay? All right, guys. Most welcome, Sahil. Nathan, I haven't read this book, The Egg. Is it? Maybe I'll read it then. I'll actually write it down right now for me to remember. Okay, right. Thought provoking. All right, guys. So I'll see you tomorrow for the plus class. Tomorrow there is a plus session on Unacademy Learning app at 9 p.m. It's we start with critical reasoning there. All right, then have a good day. Take care. Enjoy your day. Bye.